बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज सेकेंड ईयर की फिफ्थ पोएम से, जिसका नाम है एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम ओवरऑल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस पोएम से, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम तरह एमसीक्यूज जो कि पास्ट पेपर्स में आए, 10 ईयर्स के साइंस के पेपर्स में और 10 ईयर्स में जो कॉमर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स या होम इकोनॉमिक्स या मेडिकल टेक्नोलॉजी के हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपकी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सो हियर वी गो। An elegy is a poem of mourning, marriage, glamour. An elegy written in a country churchyard was composed by Thomas Gray, Thomas Campion, Thomas Jones, Oliver Goldsmith. The poet began writing this poem in 1712, 1713, 1715, 1742. When was the poem completed? 1750, 1752, 1753, 1754. This poem is inspired by the death of Richard West, Noble Mark, Henry Gibbs, none. आप जानते हैं ऑलरेडी आपको क्या करना है। आपने अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और उसके बाद आपने अपने एमसीक्यूज के आंसर एक नोटबुक पे कॉपी डाउन कर लेने हैं। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लेना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये भी जान पाएंगे कि आपने कितने एमसीक्यूज सही किए, कितने गलत किए। सो हियर आर द राइट आंसर्स। एनालॉजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग. An elegy written in a country churchyard was composed by Thomas Gray. The poet began writing this poem in 1742. When was the poem completed? It was 1750. This poem is inspired by the death of Richard West. The curfew tolls the knell of breaking day, midday, starting day, potting day. The lowing herd wind wind slowly over the lea. Lowing means low mowing, loud mowing, silence, none of these. The plowman is going towards the fields, town, home, village. The fading of the glimmering landscape on the sight indicates end of day, start of day, the end of life, end of an age. The owl is heard from the hazel tree top, elm tree top, ivy mantle tower. None of these. इससे पहले कि आप इसके आंसर्स जो है लिखना शुरू करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेकेंड ईयर के प्रोज सेक्शन के तमाम तर चैप्टर्स और प्लेस के एमसीक्यूज देख सकें विद पास्ट पेपर्स, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है उसमें प्रोज के तमाम तर यूनिट्स के एमसीक्यूज मौजूद हैं। उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख लें और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लें। Here are the right answers. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. Lowing means low mowing. The plowman is going towards home. The fading of the glimmering landscape on the sight indicates the end of life. The owl is heard from the ivy mantled tower. The moping owl complains the moon about its death, disturbed sleep, molestation, sorrow. For them no more the blazing hearth shall burn. The word them in the line stands for the man, the children, the boys, the dead. Name any two birds mentioned in the poem: cuckoo and hen, cuckoo and bulbul, cuckoo and sparrow, sparrow and hen. What lies beneath the rugged elm? The smaller plants, the animals, the dead, none of these. You know the practice well. Pause the video, write down your answers in any notebook, and then resume the video in order to tally your answers. So here are the correct answers. The moping owl complains to the moon about its sorrow. For them no more the blazing hearth shall burn. The word them in the line stands for the dead. Name any two birds mentioned in the poem: cock and sparrow. What lies beneath the rugged elm? The dead.
अगर आप चाहते हैं कि आप जो नॉवेल है द प्रिजनर ऑफ जेंडा उसके एमसीक्यूज भी आप इसी तरह से पास पेपर से साथ देख सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करके आप उसके एमसीक्यूज को भी आप देख सकते हैं। The narrow cell in the line, each in the narrow cell ever laid means small room, small trench, cardboard box, coffin. The rude forefathers means angry forefathers, harsh forefathers, illiterate forefathers, annoying forefathers. The word Hamlet means a play, a place, a small town, a small village. The victim calls for the ruler folks are dogs and the cats, honking of the cars and scooters, cocks and swallows, pigeons and cuckoos. Let no ambition mock their useful toil, soil, oil, owl. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को पहले आप नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लें। Here are the right answers. The narrow cell in the line, each in the narrow cell overlaid means coffin. The rude forefathers means illiterate forefathers. The word Hamlet means a small village. The victim calls for the ruler folks are cocks and swallows. Let not ambition mock their useful toil. The boast of heraldry, the pomp of power. The underlined area is an example of paradox, alliteration, assonance, oxymoron. If memory or their tomb no trophies raise, man raise, flowers raise, souls raise. Or flattery soothe the dull, cold air of death. The underlined area is an example of personification, alliteration, assonance, oxymoron. The applause of listening sonnets to sing, help, despise, command. With the incense kindled at the muse's flame, muse refers to goddess of Greek mythology, god of Greek mythology, hero of Greek mythology, devil of Greek mythology. Pause the video, write down your answers in a notebook, and then resume the video in order to tally your answers. Here are the right answers. The boast of heraldry, the pomp of power. The underlined area is an example of alliteration. If memory or their tomb no trophies raise, or flattery soothe the dull, cold air death. The underlined area is an example of personification. The applause of the listening sonnets to command. With incense kindled at the muse's flame, muse refers to goddess of Greek mythology. Their sober wishes never learn to disobey, stray, grow, fade. Hampden, Cromwell, and Milton are mentioned in this poem. An elegy written in a country churchyard, music when so voices die, say not this struggle, not availeth, and the 7 ages of man. पॉज कर लें अपनी वीडियो को और अपने आंसर्स को नोटबुक में लिख लीजिए, और जब आप अपने आंसर्स लिख चुके हों तो वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the correct answers. Their sober wishes never learn to stray. Hampden, Cromwell, and Milton are mentioned in this poem, an elegy written in a country churchyard. एक बार मेरे ख्याल में ये वाला एमसीक्यू पूछा भी गया है, आई गेस कॉमर्स के पेपर में। चलते हैं वीडियो में आगे और उस पार्ट पे जा रहे हैं अब हम जिसमें हम पास पेपर डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देखते रहिए इसे। और उस इंपॉर्टेंट पार्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. All of you know about this, these all formalities that is all about YouTube video. तो hopefully कि you will follow this. लेकिन एक जो रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा वो ये है कि शेयर जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को विद योर क्लास फेलोज, विद योर बैचमेट्स, ताकि जो है ये ज्यादा लोगों को फायदा दे सके। अच्छा, चूंकि ये पोएम बहुत कम पढ़ाई जाती है तो इससे एमसीक्यूज भी बहुत कम ही पूछे गए हैं। साइंस में 2 बार आया है, 2012 में और 2017 में, और कॉमर्स में 2019 में आया, यानी कि जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और 2015 में पूछा गया है। और जनरली जो एमसीक्यू आया है वो एक ही जैसा है कि एलेजी किस तरह की पोएम होती है। हमें पता है एलेजी जो है वो मॉर्निंग की पोएम होती है, जिसके अंदर आप किसी चीज को लेकर आप लेमेंट कर रहे होते हैं, आप उसको लेकर
उदासी का, गम का इजहार कर रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नोहे वगैरह होते हैं। तो साइंस के पेपर में है, एन एलजी इज द पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग, मैरिज, ग्लैमर। 2 बार पूछा गया है इसे। आपको पता है कि ये पोएम किस तरह की है, फिर भी इसके आंसर्स एंड में बताता हूं। हैम्डन, क्रॉमवेल एंड मिल्टन आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। ये भी अभी हमने बिल्कुल लास्ट में जो एमसीक्यू किया है उसके अंदर ये मौजूद था। An elegy written in a country churchyard, music when soul voices die, say not the struggle, not reveal it, the 7 ages of man। और 2015 में पूछा गया, an elegy is a poem of sarcasm, mourning, morning, mourning। तो पहले का जवाब आपको पता है, जो साइंस में है, मोर्निंग है। An elegy is a poem of mourning। Hamden, Cromwell and Milton are mentioned in this poem, an elegy written in a country churchyard। An elegy is a poem of mourning। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको प्रिपरेशन करने में बहुत मदद देगी। इसे जरूर शेयर किया करें, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दैट इज द रिवॉर्ड अगेंस्ट ऑल दिस हार्ड वर्क दैट वी आर डूइंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मैं कि आपको ये वीडियो प्रिपरेशन में कितने हेल्प आउट करती है और कर सकती है। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।